बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़किस लेक्चरस मज हेचो अस कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मुतलिक। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज प्रोटेक्शन, upliftment and scientific management of biodiversity so as to maintain it at its optimum level and derive suitable benefits for the present as well as future generation. Simple word must go कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुंद मतलब कि अस करोन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, चाहे यह प्लांट या एनिमल तो बे साइंटिफिक तरीकन पे करोन अस यह कंजर्व ताकि यह रोज अकिस ऑप्टिमम लेवल पे अवेलेबल अस हेको पत अम पे डिराइव करित सूटेबल बेनिफिट्स यमिक मकसद खतर यह रबन बनोमुत छु। वन पन्ने योत खतर फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस अत तरीकस छे वनान कंजर्वेशन, या सिंपली वनो अस कि अगर अस प्रोटेक्ट करोन या बचावोन कह एनिमल या प्लांट या कह माइक्रोब या कह ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट गसन निश तथ छे वनान कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यह अम ब्रोट त डिस्कस कोर्मुत रीजन्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कम वजूहात अस ब्रोट कन वनकस त कि यम अमि खतर मोटिवेट करान कि अस हसा पज कंजर्व करन बायोडाइवर्सिटी। त्रे वजह हेको अस बेय त रिपीट करित। अस हेको वनित कि युस हसा बायोडाइवर्सिटी छ अस निश अत हसा छ वारिया फायदे। अगर अस बिल्कुल नैरो यूटिलिटेरियन अमुक एंगल निमो सह गो कि बायोडाइवर्सिटी छ प्रोवाइड करान यूजफुल प्रोडक्ट लाइक फूड। अगर अस राइस करान इस्तेमाल, वीट करान इस्तेमाल, यह बायोडाइवर्सिटी हुंदे प्रोडक्ट। फाइबर अस कॉटन क्लॉथ लागान, अस वूलन पलव लागान, यम गई बायोडाइवर्सिटी हिंदी प्रोडक्ट। अस ड्रग्स करान इस्तेमाल यानी मेडिसिन करान इस्तेमाल, मुख्तलिफ मेडिसिन प्लांटों पे डिराइव हेकान करित। सानि इमारतन मज यस लकर लगित टिम्बर तो यह बायोडाइवर्सिटी हुंद प्रोडक्ट। या क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यम त बायोडाइवर्सिटी हिंद यमन पेजन तो किताबन पे तुम परान छु तो तिम त बायोडाइवर्सिटी पे या डाइज गो अख नैरो यूटिलिटेरियन फायदे यह कि इट प्रोवाइड्स यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक फूड, फाइबर, ड्रग्स, टिम्बर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेनिन्स, पेपर एंड डाइज। दबिस पॉइंट्स पे वो ये कि ब्रॉडली अगर सोचो मतलब बे कुछ फायदे इट प्रोवाइड्स इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब तिम सर्विस यम न अवेलेबल बाकी तरीकों गसान क्या। फॉर एग्जांपल पॉलिनेटर्स वुचान पन्न बागन मज हनी बीज पॉलिनेशन करान या बाकी इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करान तेली फ्रूट गसान असल पे डेवलप। क्लाइमेट रेगुलेशन वुचान कि क्लाइमेट रेगुलेट गसान सही पे ये फॉरेस्ट्स अवेलेबल रबन थमित। तो बे वुचान फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल गसान कल बटन पे दरियाव बटन पे वुचान कुल लगित यम जमीन रुड गसन निश या इरोजन गसन निश रुकरावान छ। या इकोलॉजिकल बैलेंस कितकन गसान मेंटेन न्यूट्रेंट साइक्लिंग सत। या इवन वो तुम ऑक्सीजन सप्लाई जन अवेलेबल बनान प्लांटों सत तो तमिक ननस में ज़्यादा पहन फिक्र तरान यम सात कोविड हालात गई ये खराब कि वुचान कि ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल प्लांटों थ्रू रबन थोमुत कि कूत इम्पोर्टेंट सानि खतर। तो ये इकोसिस्टम सर्विस मज ब्या कि अख एथिकल यूटिलिटेरियन एंगल अगर वो कि प्रेथ कुन लिविंग स्पीशीज अख वैल्यू आसान रबन कह चीज़ बनोमुत बे मकसद
through it may not have any direct economic value. वुंकस बास ना अमुक इकोनॉमिक वैल्यू क्या मगर फ्यूचरस मज हेकि ये प्लांट या एनिमल या ये माइक्रोब वारिया इंपॉर्टेंट साबित गच्छित सानि खतर तो बेयु प्रेथ कुनि स्पीशीज पन हक जिंद रोजनुक तो अस क्याज मतलब करो खुदगर्जी तो बाकिन प्लांटन या बाकिन एनिमलन दिमो न जिंद रोजन पन्ने खतर कह हालांकि तमिक नतीज नेरि इंसानस वाति पानस नुकसान अमिक अगर ये बाकिन एनिमलन या प्लांटन एक्सटिंक्ट कर क्याजकि यम बाज़ाबिता अकि मकसद खतर आमत थवन रबन मकसद खतर बनामत ताकि यम वातनावन इंसानस मुख्तलिफ रंगो फ़ायदे अस वातो बेस पॉइंट्स पे कि कंजर्वेशन स्ट्रेटजी टाइप्स क्या अस निश कंजर्वेशन व्युठ पूठ तरीको करान यथ मज ज तरीक ब्रोट कन लबन अकिस वन इन सीटू कंजर्वेशन तो बेस वनो एक्स सीटू कंजर्वेशन अजकिस लेक्चरस मज करो ज्यादा पहन टच इन सीटू कंजर्वेशन ये वो एक्स सीटू नेक्स्ट लेक्चरस मज वैसे बेटा इन सीटू कंजर्वेशन मतलब गो कि अगर कह प्लांट अगर कह एनिमल या कह माइक्रोब युस अमिस नेचुरल हैबिटेट येतन ये रोजान ये प्लांट चाहे ये फॉरेस्टस मज रोजान चाहे ये एनिमल आबस मज रोजान या ये माइक्रो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजमस पे रोजान ये थवन तथी येतन ये डालोन न पन्ने पोजिशन पे कह अगर ये फॉरेस्टस मज फॉरेस्ट येतन तो अत मज प्लांट्स अस पज यो फॉरेस्ट अंद प्रोटेक्ट कर न कि प्लांट कड़ोक अतन तो पत रुवोक बेस जाए गो इन सिटू कंजर्वेशन गो कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट युस अमिस नेचुरल हैबिटेट आसि तती अगर ये कंजर्व करोन तेल वनो अत तरीकस यस इन सिटू कंजर्वेशन ये गो सिंपल अत अपोजिट क्या सही अत अपोजिट एक्स सिटू कंजर्वेशन तम मतलब क्या गो अगर प्लांट यह कुछ पहाड़स पे चूँकि वन हेक ना ये जिंद रूजित कह कुछ वजह किन या अत ओवर एक्सप्लॉयटेशन नत डिजीज़ नत बे वजह तो करान यह प्लांट दपान हे वन यह कुन पे बचावन यह अना कड़ित तो रुवान कुन जाए बॉटनिकल गार्डनस मज युस अमिस नेचुरल हैबिटेट कह अम्स अथ पहाड़स पे अथ ऑल्टीट्यूडस पे तो अथ टेम्परेचरस पे नेचुरल हैबिटेट वो यह बेस जाए अस कोर आर्टिफिशियली मेंटेन अत उहद हैबिटेट चाहे ये ग्रीन हाउसस मज थोआ या बे कुन तरीकस मज थोआ तो अत वनो एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी यह सो कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट नेबर अगर कंजर्वेशन करो अच्छा ब्याक एग्जाम्पल तरो तुम ईजीली फिक्र जूलॉजिकल पार्कस या इन जूज वन जू चिड़ियाघर कह एनिमल अनान वन बासान यह ना रोज वन जिंद फॉरेस्टस मज कह यह कत थवन यह थवन कुन पिंजरस मज बंद अति हसा दिमो अमिस दिमो फूड त यह कर ब्रीडिंग तथी तो यानी यह बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट नश दूर अनान कड़ित तो मकसद कंजर्वेशन मगर यह अहज नंबर तूता वो डिक्लाइन गोमुत मजबूरन पेवान अमिस एक्स सीटू कंजर्वेशन कर यह गई एक्स सीटू कंजर्वेशन यह करो नेक्स्ट लेक्चरस मज डिस्कस वनकस वो इन सीटू कंजर्वेशन मज क्या क्या मतलब समझान यह क्या गई इन सीटू कंजर्वेशन इज कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट चौथस तान सही वो वो ब्याक पॉइंट कि इन सीटू कंजर्वेशन हसा करान दोयो तरीको मेथड वन हॉट स्पॉट्स या करू सा हॉट स्पॉटन पे कंजर्व नत कह प्रोटेक्टेड एरियाज चुन
अस वो हॉट स्पॉट्स क्या गई तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या गई गोड वो हॉट स्पॉट्स पत वो प्रोटेक्टेड एरियाजन मज नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो वो हॉट स्पॉट क्या गो इस ये टर्म हॉट स्पॉट तर ये फिक्र कि हॉट स्पॉट्स मज वन कि हॉट स्पॉट्स आर रीजन्स तम एरिया इन regions rich in unique biodiversity but are declared sensitive due to direct or indirect human interference. Hotspot go सू region अगर ये इंडियुक मैप यह सू region for example ये अंडमान निकोबार या ये वेस्टर्न घाट्स तम region यम जन यूनिक बायोडाइवर्सिटी यानी यमन तिस बायोडाइवर्सिटी यस न शायद वर्ल्डस मज बे कुन जाए अवेलेबल कह अम मूजूब हॉट स्पॉट्स वनान यानी अमुक ख्याल थवन कि हॉट स्पॉट्स हसा यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंडेमिक तम स्पीशीज तत चाहे यम प्लांट या एनिमल आस्तन मगर यमन तुन इंसान दिवान सोख कह तो यम सेंसिटिव बना कम मूजूब ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन interference. Biodiversity hotspots were originally identified by Norman Myers. Norman Myers ये coin करी term 1990s मज दित ये concept है अस हसा पन कह biodiversity hotspots वनकस डिक्लेयर कर ताकि अस करोक तम कंजर्व मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे अच्छा वन कत बुनियादस पे हॉट स्पॉट कह डिक्लेयर दिवान करित गोडनची कत वन मे हॉट स्पॉट्स आर डिटरमिन्ड बाय 4 फैक्टर्स गोडनुक फैक्टर युस जन नंबर ऑफ स्पीशीज आर स्पीशीज डाइवर्सिटी अस वुचन अत कत नंबर स्पीशीज डाइवर्सिटी कच तो अगर ज एरिया कंपेयर कर तो दोनवनी मज ऑप्शन 1 एंड 2 तो अस अवेलेबिलिटी यह दिमो ना हॉट स्पॉट करार कि यह तो अस ज्यादा पह ख्याल वुचन कि नंबर ऑफ स्पीशीज कत ज्यादा तो कत कम डिग्री ऑफ एंडेमिज्म वोन मे अम ब्रो कि ज एरिया यथ मज तम स्पीशीज यह गो ए यथ मज तम स्पीशीज यम वारियान जायन बे अवेलेबल यानी सी एस मज डी एस मज अच्छा मगर यह ब्याक एरिया बी अत मज तम स्पीशीज यम खाली अति योत अवेलेबल यम न ए एस मज अवेलेबल न सी एस मज अवेलेबल न बे कुन जाए अवेलेबल यानी यम बड़ एंडेमिक तो इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिन यथ एरियाज कंजर्व करने गो यह दोम पॉइंट डिग्री ऑफ एंडेमिज्म अच्छा डिग्री ऑफ थ्रेट टू हैबिटेट वो कूत थ्रेट अत एरियास यह तर तुम आराम सान फिक्र अत मा यस ओवर एक्सप्लॉयटेशन मा गसान पोल्यूशन कूता हैबिटेट लॉस मा गसान बल्कि पज सह गोडनेथ थवन हैबिटेट लॉस मा गसान तो यमन सारे चीज़न एनालिसिस करन तो दिन यह करार यह हसा हॉट स्पॉट तो डिग्री ऑफ थ्रेट टू हैबिटेट डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हालांकि वोन मे अथ मज तो टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट्स ऑल ओवर वर्ल्ड आर 34 यह दपान 34 हसा हॉट स्पॉट्स वनकस अवेलेबल वर्ल्डस मज तो इंडिया हैज़ 4 हॉट स्पॉट्स तो इंडिया मज आम फिलहाल डिक्लेयर करने 4 तथ मज इंडो बर्मा रीजन इंडो बर्मा गो यानी इंडियुक अगर यह मैप निमो इस यपर एरिया तो यह गोस बर्मा यथ म्यांमार वन तो यह एरिया यह निवान इंडो बर्मा रीजन यस हॉट स्पॉट गो यह
بیٚیہِ چھِ ایٖسٹٲرٕن ہِمالیاز گوٚو حظ ٹھیٖک یہِ نِمو أسۍ اِنڈیہُک میپ تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان یہِ گوٚو وٮ۪سٹ یہِ گوٚو ایٖسٹ تہٕ ایٖسٹٲرٕن ہِمالیاز تہِ چھِ أسۍ نِوان کَتھ سۭتۍ تہٕ یِم تہِ ہَسا چھِ ہاٹ سپاٹٕس اچھا بیٚیہِ کیٛاہ حظ چھُ اَسہِ وٮ۪سٹٲرٕن گاٹٕس تہٕ سری لنکا یُس زَن ساوُتھ اِنڈیا چھُ اَتھ منٛز چھُ یہِ گوٚو وٮ۪سٹ تہٕ یَپٲرۍ چھُ سری لنکاہُک پاٹ تہِ تہٕ یہِ چھُ اَسہِ سورُے یِوان کَتھ بیٚیِس أکِس ہاٹ سپاٹَس منٛز گٔے 3 ایٖسٹٲرٕن گاٹٕس وٮ۪سٹٲرٕن گاٹٕس تہٕ سری لنکا تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ حظ چھُ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ سُہ گوٚو اگر أسۍ یہِ اِنڈیا نِمو تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ اٮ۪نڈومان نِکوبار آیلینڈٕس چھِ ییٚتٮ۪ن تہٕ یِم تہِ چھِ یِوان ہاٹ سپاٹسٕے منٛز ہاٹ سپاٹٕس تہٕ یِتھ کٔنۍ گٔے یِم 4 ہاٹ سپاٹ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ یاد کہِ اِنڈو برما ریٖجن چھُ ایٖسٹٲرٕن ہِمالیا چھُ وٮ۪سٹٲرٕن گاٹٕس سری لنکا چھُ أتھۍ سۭتۍ تہٕ سینڈلینڈ یا اٮ۪نڈومان نِکوبار اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیٛاکھ چیٖز ہیٚچھُن زِ یُس أسۍ ییٚتٮ۪ن ٲسۍ وَنان کہِ چلو ہے یِم ہَسا گٔے ہاٹ سپاٹٕس وۄنۍ ؤنۍتو پرٛوٹٮ۪کٹِڈ ایریاز کٕم گٔے پرٛوٹٮ۪کٹِڈ ایریاز منٛز چھُو تۄہہِ یاد تھاوٕنۍ 2 چیٖز بٔلکہِ 3 اَکھ گٔے نیشنَل پارک یِتھ کٔنۍ داچھی گام نیشنَل پارک چھِ کازی رنگا نیشنَل پارک چھِ وایلڈٕ لایف سینکچُریٖز چھِ یِتھ کٔنۍ گُلمرگ وایلڈٕ لایف سینکچُری چھےٚ بایوسفیر رِزٲروٕز تہٕ أسۍ وٕچھو کَم سے کَم آز یہِ نیشنَل پارک گٔے کیٛاہ وٕچھو بیٹا protected areas these are the areas especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity and of natural and associated cultural resources maintained and managed through legal or other effective measures تہٕ یِمن چھِ أسۍ وَنان protected areas کینٛہہ تِتھۍ ایریا یِم أسۍ لیٖگلی یا بدل طٔریٖقو چھِ أسۍ پرٛوٹٮ۪کٹ کَران اَتھ منٛز ووٚن مےٚ نمبر 1 پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ یِوان نیشنَل پارک أسۍ سَمجھو یہِ نیشنَل پارک گٔے کیٛاہ تھوڑا یی اَسہِ آیڈیا نیشنَل پارکَس منٛز یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ ووٚن داچھی گام نیشنَل پارک چھِ یُس زَن کٔشیٖرِ منٛز چھِ مینٹینٕڈ باے گورمٮ۪نٹ اینڈ ہیلپ اِن بیٹرمٮ۪نٹ آف وایلڈٕ لایف یُس تہِ اَتہِ وایلڈٕ لایف چاہے پٕلانٹ چھُ یا اینِمٕل چھُ یا باقٕے آرگنِزمٕز چھِ تِم چھِ یِوان پرٛوٹٮ۪کٹ کَرنہٕ باے گورمٮ۪نٹ لیجِسلیچَر یا تِہُنٛد گورمٮ۪نٹُک قانوٗن چھُ آسان کہِ یَپٲرۍ یَپٲرۍ بَنٲیِو سا یَتھ باونٛڈری یور نَسا گژھِ نہٕ دیُن اَژنہٕ کٲنٛسہِ اِجازتہٕ بغٲر باقٕے چیٖز دے آر مینٹ فار پرٛوٹٮ۪کشَن آف بوتھ فلورا اینڈ فانا یہِ چھُ مےٚ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت فلورا گٔے پٕلانٹ سٕپیشیٖز تہٕ فانا گٔے اینِمٕل سٕپیشیٖز تہٕ یِم چھِ دۄنوٕنی خٲطرٕ ضروٗری آسان پرٛوٹٮ۪کشَن خٲطرٕ اچھا وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَتہِ نیشنَل پارکہِ منٛز بیٚیہِ ویریَس ایکٹِوِٹیٖز لایک کَلٹِویشَن آف لینڈ گریزِنٛگ فارٮ۪سٹرٛی پرٛایویٹ اونَرشِپ آر پرٛوہِبِٹِڈ اَتہِ دِنہٕ نہٕ کَلٹِویشَن آف لینڈ کَرنہٕ کینٛہہ زٔمیٖندٲری بیٚیہِ کَرنہِ کانٛہہ اَتہِ نیشنَل پارکہِ منٛز تہِ چھُنہٕ ایلو کینٛہہ گریزِنٛگ نَتہٕ بیٚیہِ تیٖر رَچھنہِ تہٕ تہِ تہِ چھُنہٕ ایلو کینٛہہ فارٮ۪سٹرٛی یا فارٮ۪سٹرٛی ایکٹِوِٹیٖز یا پرٛایویٹ اونَرشِپ ژٕ نہِ مکان پورہ بَنٲیِتھ تہِ چَلہِ نہٕ کینٛہہ تہٕ یِم چھِ پرٛوہِبِٹِڈ ایکٹِوِٹیٖز اَتہِ نیشنَل پارکہِ منٛز تہٕ ایٹ پرٛزَنٛٹ دیر آر مور دٮ۪ن 100 نیشنَل پارکٕس اِن اِنڈیا اِنڈیاہَس منٛز چھِ لگ بگ وٕنکٮ۪س 100 اِوٕن اگرَے جنؤری 2021 وٕچھو أسۍ 101 نیشنَل پارکٕس چھِ چوٗنٛکہِ یِہُنٛد نمبر چھُ منٛزٕ بَڑان تہٕ منٛزٕ چھِ یِوان کانٛہہ ڈِکلیَر کَرنہٕ نَسا وۄنۍ چھُنہٕ اَمِچ ضروٗرت کینٛہہ تہٕ یوٗجؤلی چھُ وٕنکٮ۪س 101 نمبر نیشنَل پارکَن ہُنٛد أسۍ چھُ کینٛہہ نیشنَل پارکٕس یِم زَن کٔشیٖرِ منٛز چھِ تھوڑا روزِ توتہِ تَمیُک آیڈیا
वैसे बेटा ये गई दाछीगाम नेशनल पार्क ये दाछीगाम साइडस में तो अति सलीम अली नेशनल पार्क तह ब्याक काजी नंगा नेशनल पार्क सॉरी काजी नाग नेशनल पार्क तो यी पार्क काजीरंगा सह आसामस मज तो काजी नाग नेशनल पार्क ब्याक किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क तो यम 4 नेशनल पार्क्स JK मज तो बेस ब्याक नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क यह लद्दाखस मज तो यह हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क फॉर एग्जांपल ये वुचो तुम ये हांगुल रोजान तो इथे कन हेकु मे तुम वनित नेक्स्ट लेक्चर यम सात मे वनजो तुम काजी नाग नेशनल पार्क अत मज कुछ स्पेशल एनिमल या किश्तवाड़ नेशनल पार्क मज कुछ स्पेशल एनिमल तो अम सत रोज थोड़ा आइडिया JK के नेशनल पार्कन हंद बे वातो बे पन्ने जाए अच्छा ये वो ब्याक चीज़ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स पर अम पत तो फिलहाल वो सेंचुरीज क्या गई ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विद और विदाउट लेक फॉर कंजर्वेशन ऑफ फाना यम दपान है कंजर्वेशन ऑफ फाना खतर हसा कह ट्रैक्ट ऑफ लैंड करान नोटिफाई तो तथ हसा वन सेंचुरी तो वो अत तो हुत कूचा फर्क ग्रेजिंग कल्टिवेशन हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप इज परमिटेड अत अगर ग्रेजिंग तह परवाह कह कल्टिवेशन तह दक्षिण खोवर गसान ति चल तो बे प्राइवेट ओनरशिप तह कैफेटेरिया त्रावान बाकी चीज़ त्रावान अत एरियाज में कन तुम गुलमर्ग वो तो अत सेंचुरी मज यह परमिटेड अच्छा मोर देन 500 sanctuaries are present in India occupying 3.6% of geographical area तो युस जन इंडिया वुचान अत मज लगभग 3.6 geographical area 500 सेंचुरी वनकस ऑक्युपाई करित वुचा यपर वो ब्याक चीज़ यम गलत लिखमुत ये वनकस नेशनल पार्क दाछीगाम सेंचुरी अच्छा